So you take up this increase in supply and decrease in supply. We have already discussed extension in supply and contraction in supply. In extension in supply and contraction in supply, there was movement on the same demand curve. But in increase in supply and decrease in supply, there is shift in the supply curve. We shift from one supply curve to another supply curve. One thing. Next thing. Shift in the supply curve. Shift in the supply curve. Or it is distinguished between increase in supply and decrease in supply. So in increase in supply and decrease in supply, there is shift in the supply curve. We shift from one supply curve to another supply curve. पहले हम लिखेंगे increase in supply. What is increase in supply? एक चीज आपको याद रखनी है, when there is extension in supply and contraction in supply, there is change in price only. In case of extension in supply and contraction in supply, there is change in price only. But in case of increase in supply and decrease in supply, there is change in factors other than price. जो price के बगैर जो factors हैं, उनमें change होती है. तो उस केस में हमें increase in supply और decrease in supply होता है. So you write down increase in supply. What is increase in supply? When quantity supply of a good increases due to change in factors, other than price. Like we have change in cost of production. जो हमने factors of supply में पढ़े हैं. Change in technology. We have change in price of related goods, etc. It is called a increase in supply. Increase in supply. So जब प्राइस के बगैर जो भी फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आ जाएगी तो उस सूरत में सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी. अगर इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई है, अगर डिक्रीज होगी तो हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस. प्राइस के बगैर जो भी फैक्टर्स हैं अगर उनमें कोई चेंज आएगी तो हम कहेंगे ये. So in this case the supply curve shift towards right. In this case there is shift in supply curve. Supply curve shift towards right. Right side में ये shift होगी. अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी due to change in cost of production, due to change in technology or price of related goods, etc. But price remains same. Here price remains same. So we can explain this with the help of supply schedule. Supply schedule हमें ज़्यादा ये explain करेगी कि क्या है. Price and quantity supply. We have price and quantity supply. For example, किसी चीज का प्राइस 10 रुपीज है और सप्लाई 5 है. अब अचानक सप्लाई इंक्रीज हो गई, ये 10 हो गई तो प्राइस सेम है 10. और भी अगर ये चेंज हो गई 15 हो गई तो प्राइस सेम है 10. तो हम इस केस को कहेंगे दिस इज इंक्रीज इन सप्लाई. ये सप्लाई कैसे चेंज हो गई? इट कैन बी चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इट कैन बी चेंज इन टेक्नोलॉजी और इट कैन बी चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और नंबर ऑफ सेलर्स और गोल ऑफ द फर्म्स एटसेट्रा. So there are so many factors
other than price. In addition to price, there are other factors which can increase the supply of a good. Here, those factors are taken into consideration. تمے factor چھِ ییٚتہِ consider یِوان کرنہٕ یِم price علاوٕ آسان یِم price علاوٕ آسان price چھُ ییٚتہِ same روزان تہٕ extension in supply منٛز چھُ price گژھان increase تمی سۭتۍ چھُ supply گژھان increase مگر ییٚتہِ چھُنہٕ price گژھان change کِہینۍ نہ گژھان کم نہ گژھان زیادٕ مگر supply گژھان increase in case of increase in supply so this is the supply schedule which shows how supply increases but price remains same. Supply increases but price remains same. Go yelte price supply gets increase magar price roise same at one increase in supply at karona istimal extension in supply kehin ye main pata kis videos mas through tha agar is ye how through a diagram how to show it with the help of a diagram ak diagram kis paithan banao is use as high increase in supply. X-axis is how quantity supply. The Y-axis is how price. ठीक है? Y-axis Yes, sir. price. O Y how price, O X how supply. अगर जन ऐसे आख supply करो, if we have a supply करो, SS supply करो शायद पता ये it slopes upwards from left to right. It has positive slope. Right. Demand करी which आसा negative slope इस पर इस तरह ये चीज supply करो. ये तो लो इस price 10 supply 5. For example, ये तो ऐसे price 10 quantity supply is 5. Price is 10, quantity supply is 5. 5, yes. 5 5. This point is but for example, each point A. But point A supply कर repeat. You size how much price to 10, supply to 5. Go ये point. Economic supply का increase. Go ये use horizontal line each increase gasa. Each havan zyada supply. For example, each havan zyada as supply. You point was A havan 5 supply. Each havan for example 10 supply. Each havan 10 supply. ठीक है? ये quantity supply. Yes, sir. Go us gay shift from point A SS supply करूँ to point B on another supply करूँ ये बनी ऐसे no supply करूँ ये बनी ऐसे no supply करूँ yes ये बनी ऐसे supply करूँ S1 गो इस गई ये shift प्राइम supply करूँ पेट नई supply करूँ पेट अथवा ना इस यासे गई increase in supply it is due to increase in supply so as by no point. You say how much 10 to price 10 to supply yet those how as you pause to price 10 to price pause to supply ठीक है go ये graph समझो बे graph समझाओ बे ये ऐसे supply करो SS गोडनिक supply yes sir वैसे after those point A you say how was that price pass to supply extra point A yes sir each have pass to supply that to price you see vertical you see height how is price you see horizontal length each has how supply ये क्या चीज which tables most पाते ये increase in supply का increase from 5 to 10 go you see a horizontal line you see length line you hurry but it's how 0 to 5 which how you 10 time which how 10 time it is 10 time word
अस पे नो पॉइंट त्रावन ये द्राय नेबर निम सप्लाई कर ये त्रो अति सप्लाई करो तेल बेकिस पॉइंट्स पे अत नयस पॉइंट्स पे सप्लाई करूँ त्रावन गई शिफ्ट ओतान ए पॉइंट्स पे वो बी पॉइंट्स पे नई सप्लाई करूँ त्रो सप्लाई करूँ कर शिफ्ट सप्लाई करूँ फ्रॉम SS to S1 this shift from SS to S1 shows increase in supply हको यथ लिखित बोनकिन from the table and diagram तो हेकु लिखित यथ बोनकिन from the table and diagram हको लिखित पे लेखन बोनकिन table and diagram from the table and diagram when price is ₹10 the quantity supply is 5 we are at point A we are at point we are at point A on supply करूँ SS on supply करूँ SS the quantity supply increases to 10 units but price remains same Same. as ₹10 and we move to another point on new supply curve करो S1 we shows increase in supply increase in supply. shows increase in supply so we can say that when there is shift in the supply curve there is increase in supply so increase in supply shows shift in supply curve करो so increase in supply shows two things it shows increase in supply shows two things ये important point है shows two things क्या क्या चीज ये दिखाता है it shows two concepts more is supplied at same price number 1 more Got it. is supplied at same price more is supplied at same price. और अगर यहां हम शिफ्ट करेंगे ये डायग्राम में देखो पॉइंट A B ये C same is first is more is supplied At same price. and next क्या है next अगर यहां शिफ्ट हो जाएंगे same is supplied at lower price number 2 same is supplied at lower price so increase in supply shows two things two concepts either more is supplied at same price में कोई change नहीं है supply increase हो गई it is due to other factors or same quantity is supplied at lower price same is supplied at lower price so this first concept shows movement from A to B and second concept shows movement from A to C so एक चीज आप जरूरी ध्यान रखना याद रखना कि there is shift in the supply curve in case of increase in supply so there is shift in the supply curve towards right side में ये shift हो गया so this is all about the increase in supply ये लिख लिया ये सारा कुछ है Yes sir. हाँ तो अगर हम और भी एक रिहर्सल में आपको दे दूंगा डायग्राम के बारे में अगर हमारे पास ये डायग्राम है नजर आता है Yes sir. No sir. थोड़ा नजर आता है अगर ये हमारे पास
डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाई है, ये सप्लाई करो है एस एस, ठीक है। पॉइंट यहां है, यस सर। ये दिखाता है हमें 5 सप्लाई 10 प्राइस, ठीक है, 5 सप्लाई sir. एंड 10 प्राइस। 10 price. अब सप्लाई इंक्रीज हो गई मगर प्राइस सेम, सप्लाई इंक्रीज हो गई तो ये 5 सप्लाई थी, अब ये फॉर एग्जांपल 10 सप्लाई बन गई, यहां 10 सप्लाई बन गई, यहां 10 सप्लाई आ गई, तो ये प्राइस सेम है, प्राइस सेम है, प्राइस की जो हाइट है वो सेम है, तो ये हाइट जो है ये सेम रहेगी, ये हाइट सेम रहेगी। ये हम दूसरे पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, पॉइंट बी पे, तो यहां हमें दूसरी सप्लाई कर्व ड्रॉ करनी है, S1 S1। So movement from A to B shows increase in supply, or shift in the supply curve from S to S1 S1 shows increase in supply, ये increase in supply है, increase in supply, ठीक है। Yes sir. ये मैंने दूसरी बार दिखाई। अब डिक्रीज इन सप्लाई लिख लीजिए, नाउ यू राइट डाउन द डिक्रीज इन सप्लाई। Sir, 1 minute ये बताएंगे। कुछ ये चल रहा Yes sir, graph. ये शुरू ही उसमें और Yes sir. Sir तो एक स्क्रीन को रहा। डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई लिख लीजिए, when quantity supply of a good decreases due to change in factors other than price, due to change in factors other than price, Price. like cost of production, जब सप्लाई डिक्रीज हो गई प्राइस के दौरान नहीं, ड्यू टू प्राइस, नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइस बट ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ सेलर्स, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, etc. It is called a decrease in supply. Decrease in supply. Shabash. It is called a decrease in supply. Supply. So in this case, yahan be shift. In this case, there is shift in supply curve. There is shift in Supply curve towards left. यहाँ राइट साइड था, वहां लेफ्ट साइड में हो जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ, अब सप्लाई शेड्यूल बना लीजिए, कैसे हम दिखाएंगे सप्लाई शेड्यूल में कि कैसे सप्लाई डिक्रीज होती है बट प्राइस सेम, सेम प्राइस बट सप्लाई डिक्रीज। अगर ये हमारे पास सप्लाई शेड्यूल है, प्राइस and quantity supply. Supply schedule. For example, price अगर 10 है तो quantity supply भी 10 है। अगर प्राइस quantity supply change हो गई from 10 to 5, ये 20 लिख लीजिए आप, सॉरी ये 20 लिख लीजिए आप। प्राइस सेम है, क्वांटिटी सप्लाई कम हो गई 10, अगर और क्वांटिटी सप्लाई कम हो गई बट प्राइस सेम, सो दिस इज द केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, दिस इज द केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। अब सप्लाई कर्व बनाओ, OX
shows quantity supply and OY shows price. ठीक है, ये हमारी सप्लाई कर्व है, फॉर एग्जाम्पल SS सप्लाई कर्व है। तो यहां ये पॉइंट में उठाऊंगा जो पॉइंट दिखाएगा मुझे 10 है प्राइस, 20 है सप्लाई। ये 20 यहां सप्लाई है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस क्या है 10। शाबाश। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट E और पॉइंट X और पॉइंट M, एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट M लिखेंगे, यहाँ मैं पॉइंट A मैंने इस्तेमाल किया, यहाँ पॉइंट M लिखेंगे। अब सप्लाई डिक्रीज हो गई फ्रॉम 20 to 10, यहां सप्लाई 10 पे आ गई, बट प्राइस इज सेम, प्राइस इज सेम। ये यहाँ प्राइस सेम रहेगा, ये यहाँ प्राइस सेम रहेगा ना। तो फ्रॉम पॉइंट M to N, हम पॉइंट M से शिफ्ट हो गए N है? जो N दिखाता है, व्हाट N क्या दिखाता है? N दिखाता है 10 is supply, 10 is price. M क्या दिखाता है? M दिखाता है 20 supply, 10 price. So there is decrease in supply but price same. तो यहां हम दूसरी सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे। This is S2 supply curve. So shift of supply curve from SS to S2 shows decrease in supply. Decrease in supply. So decrease in supply shows two things. एक, less is supplied at same price, और same is supplied at higher price. अगर हम यहाँ MN, यहाँ point Q हम करेंगे, so point M to N shows less is supplied at same price. Point M to Q, movement from point M to Q shows same is supplied at higher price. ये higher price, higher price पे ज्यादा सप्लाई होना चाहिए, लेकिन सेम सप्लाई करता है। तो जिस तरह हमने उस डायग्राम में और टेबल को लिखा है, फ्रॉम द टेबल एंड डायग्राम व्हेन प्राइस इज 10 सप्लाई इज 20, इसी तरह इसको भी लिख लीजिए आप। ये डायग्राम समझ आ गई? यस सर। हाँ, पहले सप्लाई कर्व डालनी है, उस पे एक पॉइंट जो हमें पहली सप्लाई और पहला प्राइस दिखाएगा, फिर शिफ्ट होगी है, इसी तरह लिखना है इसको, फ्रॉम द टेबल एंड डायग्राम व्हेन प्राइस इज ₹10, the quantity supply is 20, we are at point M on supply curve SS, on supply curve SS. The quantity supply decreases but price remains same, and we move to point N on new supply curve S2. This shift of supply curve from SS to S2 shows decrease in supply. Decrease in supply. So decrease in supply shows two things. Decrease in supply shows two things. क्या क्या? Decrease in supply shows two things. Number one, less is supplied at same price. Less is supplied at
same price. Less is supplied at same price. Less is supplied at same price. Number 2, same is supplied at higher price. Same is supplied at higher price. At higher price. Same is supplied at higher price. Less is supplied at same price. Pehla point hai, that is from point M to N. That is from point M to N. And same is supplied at higher price. It is from point M to Q. To point Q. So it shows 2 things. Less is supplied. That is, we decreased our supply from 20 to 10, but price same. There is movement from point M to N on the another supply group. There is altogether shift of the supply group. Also, point M to Q shows same is supplied at higher price. So this is the diagrammatic representation and this is the tabular representation or supply schedule. Supply schedule. फिर से मैं दिखाऊं ये supply diagram. No, sir. बेहवा किमने? No, sir. अब हमें एक चीज रह गई. What are the causes of increase in supply and causes of decrease in supply? वो भी लिख लीजिए आप. नहीं, ये खत्म करेंगे ना. इसमें थोड़े पॉइंट्स हैं. ये हो गया? Yes, sir. ये हो गया? ये हो गया है? अब थोड़ा टाइम आपको 1-2 मिनट और देना है तो मैं आपको दिखाऊंगा ये causes of increase and decrease in supply. पहले आप लिख लीजिए causes of increase. Increase. Yes. Causes of increase in supply. अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा. What are the causes of extension in supply? अनु चली गई. Extension supply का एक ही cause है, that is increase in price. Contraction in price, contraction in supply का एक ही cause है, decrease in price. तो यहां वो नहीं. यहां causes of increase in supply है, price तो cause नहीं है. यहां price cause नहीं है. यहां क्या है? यहां increase, causes of increase in supply. Fall in the price of substitutes. Fall in price of substitutes. एक cause है. Second cause है fall in the price of factors of production. Fall in the price of factors of production. Factors of production. Factors of production. किस किस में? Factors of price of factors of production means rent, wages, interest, etc. Or cost of production, or fall in cost of production. Number 3 लिख लीजिए. अभी 10 मिनट है हमारे पास. थर्ड है increase in number of firms. Increase in number of firms. Number 4th, firms expect fall in prices in future. Price fall in future. Firms or suppliers or producers, firms expect price fall in future. Price fall in future. Number 5th,
change in goal of firms. Change in goal of firms. Or number 6, change in technology. Change in technology. That is improvement in technology. Improvement in technology. Improvement in technology. So these are some causes responsible for increase in supply. Why supply increases? ये है causes जिससे सप्लाई इंक्रीज होती है. अब लिख लीजिए causes of decrease in supply. इसके opposite to these. Opposite ये हो गया, पत्थर ये हो गया. यस सर. हाँ, ये मैं रब करूं, सॉल्व करूं. यस सर कीजिए. अब है decrease in causes of decrease in supply. What are the causes of डिक्रीज इन सप्लाई. डिक्रीज इन सप्लाई के लिए कौन से कॉजेस है? नंबर फर्स्ट, उधर क्या लिख लिया? फॉल इन प्राइस वहां लिख लिया, यहां राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस में राइज हो गया. नंबर 2, राइज इन price of factors of production. That is cost of production. Rise in cost of production. Cost of production. Number 3 है decrease in number of firms. Decrease in number of firms में number of firms. Number 4 है producers or firms, जिस तरह वहां हमने लिखी, expect price rise in future. वो expect कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर में प्राइस राइज होगा तो वो आज होल्ड करेंगे. They will not supply at present. Price rise in future. Price rise in future. Number 5 है change in goal of firms. Change in goal of firms. Firms में गोल में चेंज आएगा. वहां हमने लिखा चेंज इन टेक्नोलॉजी और यूज ऑफ इंप्रूव टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. यहां लिखेंगे यूज ऑफ ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, ऑब्सोल्यूट और प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, ऑब्सोल्यूट और प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, so that will increase the costs and supply may decrease. So these are the causes of decrease in supply. Decrease in supply. कल हम इंशाल्लाह उठाएंगे velocity of supply. Velocity of supply. जो मेरी वीडियोस हैं YouTube पे वो देखना कौन कौन के हैं. हाँ, उसमें एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन देखना है. लॉ ऑफ सप्लाई मैंने डाला है, वो देखना आप. ओके, ओके सर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज सर. ओके.